Assalamu alaikum, boys and girls. Again, Sajid, Jafri, very different. Methane, your what? CH4. और you may write what? सब जानते हैं, मुझे बार बार बात करने की जरूरत नहीं है. Understood है? Like this. Methane. Is it different of you? Just recall my words. कल मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड sp hybridization, डबल क्लोरीन बॉन्ड sp2 hybridization, sp3 सिंगल बॉन्ड sp3 hybridization. ठीक है? सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, और ट्रिपल बॉन्ड sp hybridization as exemplified by the oxygen, nitrogen and some other molecules. अब थोड़ा सा इसे एज ए सेपरेट डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा इसको फोकस कीजिएगा. देखिए, कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो अब आइए प्लीज, इन मीथेन द सेंट्रल एटम कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज. अब मुझे बताइए प्लीज, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, देखिए शेप्स ऐसे होते नहीं है, इसलिए खूबसूरती के लिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए ना. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 एक जैसे ऑर्बिटल बनते हैं. कीपिंग माय लास्ट लेक्चर इन योर माइंड, द इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, sp3. अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन वी नो दैट हाइड्रोजन इज जस्ट 1s1 इज इक्वल टू हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है s. अभी देखिए ना, S का शेप क्या होता है? स्फेरिकल. ये हाइड्रोजन और ये इसका इलेक्ट्रॉन. अब मुझे बताइए, हाइड्रोजन का S और कार्बन का sp3, मुझे बताइए हेड ऑन ओवरलैपिंग. देखिए फिर वही बात जो मैंने कल समझाई थी, हाइब्रिडाइजेशन पहले हो रही है, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग उसके बाद हो रही है. और किसके दरमियान ओवरलैपिंग है? S और P के दरमियान. और कौन सी ओवरलैपिंग है? हेड ऑन ओवरलैपिंग, फेस टू फेस ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड. बिल्कुल इसी तरीके से 4 हाइड्रोजन, ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर इन सेम एनवायरनमेंट. दैट्स व्हाई अगेन यू आर गेटिंग अ सिग्मा बॉन्ड. दैट्स व्हाई अगेन यू आर गेटिंग अ सिग्मा बॉन्ड. यू गॉट इट माय माइंड? अगेन यू आर गेटिंग अ सिग्मा बॉन्ड लाइक दिस. सो इन मीथेन और इज अ डिफरेंट ऑफ यू, आपके सामने हो गया. ठीक है? और याद रखिएगा, अब क्योंकि देखिए सिंगल कोडेड बॉन्ड, सो सेंट्रल एटम इज कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज. और अगर हम इनको एक पर्टिकुलर शेप देना चाहें, तो इन पर्टिकुलर शेप्स में अगर हम इस पर बात करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी, बहुत करीब आ गया मैं आपकी. इधर देखिए ना, व्हेन दीज ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर 3 डायमेंशनली, अगर देखें तो द मॉलिक्यूल लुक्स लाइक दिस. द मॉलिक्यूल लुक लाइक दिस. The shape is so called regarding all possible directions. It looks like a tetrahedral structure. कल मैंने कहा था, मैं लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था, remember or not? जो आपने कल लेक्चर सुना होगा उसमें आपने सुना होगा, मैंने कहा था the sp3 hybridization is also known as tetrahedral hybridization, but not always. क्योंकि अभी देखिए मैंने अमोनिया बनाया था, अमोनिया का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होता sp3 hybridization के. क्यों नहीं होता? उसका जवाब मिलेगा, मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा The shape of molecules according to Vesper theory, जिसका इंट्रोडक्शन भी मैंने बताया था कि जब मैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं हाइब्रिडाइजेशन को वेस्पर थ्योरी के साथ मिला के पढ़ाऊंगा. देन यू विल सी माय वर्ड्स एंड कंपैरिजन. लेकिन यहाँ पर आप देखिए, द मीथेन इज टेट्राहेड्रल. और जब टेट्राहेड्रल की हम बात करते हैं तो यू कैन गिव द शेप लाइक दिस. अकॉर्डिंग टू दिस वन यू मे राइट लाइक दिस वन and this one. You got it in my mind? Hope all of you get in my mind. Hydrogen, and hydrogen. If you plotted the mean lines to connect all possible coordinates, like this. If you plotted these all possible coordinates, like this, even you may write the last line. It's not necessarily, but because of खूबसूरती, is like it looks like this. जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, like this. Molecule looks like this. All angles are about 9.5. The bond length is about 1.09 angstrom or 0.109 nanometer. ठीक है? The shape of molecule is tetrahedral. The shape of molecule is tetrahedral. Tetrahedral 109.5 degree. This is the shape of methane. Boys and girls, अमोनिया में भी sp3 थी, लेकिन उसका एंगल 109 नहीं होता. दैट्स व्हाई वी
can't give the name tetrahedral, but it is said to be like a pyramid, like a pyramid. It looks like a pyramid. ठीक है? और ऊपर यहाँ पर जो होगा डेडलॉक पेयर, वो क्या होगा मैं बताऊँगा, ये नोट करिए ना, लेकिन फॉर द टाइमिंग जो टॉपिक है इसको फोकस कीजिए. अच्छा जी, मूविंग अहेड बॉयज एंड गर्ल्स, इसके बाद आइए. तो अगर आप थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल अगर मैं आपसे पूछूं मीथेन, तो आप क्या बोल सकते हैं इसके लिए? आप बता सकते हैं द सेंट्रल एटम मीथेन इज कार्बन. Carbon is sp3 hybridized and having 4 sp3 hybrid orbital, each occupied by each electron. And these sp3 of central carbon overlap with s of hydrogen by s sp3 overlapping. So there are 4 sigma covalent bond within methane between carbon to hydrogen by s sp3 overlapping. If we plotted all possible coordinates, we can get the shape like tetrahedral, where the bond angle between hydrogen carbon to hydrogen is 109.5 and the bond length between carbon to hydrogen is about 1.09 angstrom or the point 109 nanometer. The shape of the methane is tetrahedral. These are some features related to methane. इसी कॉन्टेक्स्ट में आइए मज़ीद बात करते हैं इथेन. आइए इथेन पे बात करते हैं. ठीक है, कंपैरेटिवली अब जरा देखिएगा मेरे बच्चों. Ethane, the formula is C2H6 और ethane में हम इस तरीके से बच्चों को बताते हैं like this, singly bonded like this, like this. अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फिर हम आगे मूव करते हैं. क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मींस अंडरस्टूड है कार्बन sp3 hybridized. और sp3 hybridized है, कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, the same bond length is about, that's your what? That's your 1.09. अब कार्बन टू कार्बन भी है, that's your 1.54, I don't remember exactly. और all angles, हाइड्रोजन कार्बन टू हाइड्रोजन all angles, या हाइड्रोजन कार्बन टू कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन टू कार्बन all angles same 109.5 degree. Simply this is the structure of ethane in the front of you. अरे इंटरेस्टिंग बात है. अभी अब एक बात मुझे बताइए, मीथेन अगर टेट्राहेड्रल है तो इथेन 2 टेट्राहेड्रल का कॉम्बिनेशन होगा. देखिए ना, वो अगर मैं इसके 2 पार्ट करूं तो वन ऑफ द टेट्राहेड्रल यूनिट ये रहा, वन ऑफ द टेट्राहेड्रल यूनिट ये रहा. मीथेन अगर टेट्राहेड्रल है तो इथेन इज द पाई टेट्राहेड्रल बिकॉज दीस 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स. अच्छा, क्या मतलब है इस बात को छोड़ के भी समझना. इधर देखिए, रिलैक्स, फील कंफर्टेबल. अब आइए, कार्बन इज sp सेम, द sp3 hybridized like methane, sp3 hybridized, तो बेटा वही कितने ऑर्बिटल होंगे? ये रहा कार्बन आपका, ठीक है. और अब sp3 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 sp3, this one carbon is a different of you. ये देखिए बेटा, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा. ठीक है. The both carbon atoms are in same environment with respect to their surrounding. तो जो सिचुएशन इसके साथ है वही सिचुएशन इस कार्बन के साथ भी होगी. ये रहा, ठीक है, दूसरा कार्बन ये रहा. अब इस पे बात करते हैं. ये देखो प्लीज, एनी डिटेंशन, ये रहा कार्बन, ठीक है जी. ये दूसरा कार्बन आ गया और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बिकॉज़ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा. अब देखिए प्लीज, हर कार्बन 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है. अब ये देखिए प्लीज, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का s, अब ओवरलैपिंग s sp3, हाइड्रोजन का s, कार्बन का sp3, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, जस्ट रिकॉल माय वर्ड्स. दूसरा हाइड्रोजन लाइक दिस, अगेन सिग्मा बॉन्ड लाइक sp3. द थर्ड हाइड्रोजन अगेन सिग्मा बॉन्ड बाय sp3, ईच कार्बन बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन एटम्स. अच्छा, अब इसको देखिए, ये हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन से ज्वाइन है. अब इसको देखिएगा बेटा प्लीज, लिसन, ये हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, वही sp3 ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड. In the same way, the second hydrogen बेटा, ये हाइड्रोजन
हो गया इसके पास ये सिग्मा बॉन्ड। The third one is your hydrogen again in front of you, like again sigma bond. आपने देखा each carbon bonded with 3 hydrogen atoms by ssp3 overlapping. Remaining the carbon is all singly bonded with next adjacent carbon. इसका sp3 इसके sp3 के साथ sp3 overlapping, face to face overlapping. Now you are getting what? A sigma bond. और मैंने कहा था the sigma bond is always sigma bond. It means that in ethane 2 types of the sigma bond between carbon to hydrogen and carbon to carbon. The carbon to carbon by sp3 overlapping, and between carbon to hydrogen by sp3 overlapping. Total number of sigma bonds are 7. Out of 7, 6 of them between carbon to hydrogen and 1 of them between carbon to carbon. Bond lengths are same or angles are same. The structure of ethane is a different of you. अब जब दोनों बात कही थी कि देखो अगर हम इसको इस तरीके से देखें ना मेरे बच्चों, ये देखो एक टेट्राहेड्रल यूनिट ये रहा like this, बिल्कुल उसी तरीके से देखिए ना, ये दूसरा टेट्राहेड्रल यूनिट आपके पास आ गया। अब देखिए दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपको नजर आना शुरू हो गए। अब डोंट ऑन इट, आप देखिए आप यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन इट, यू आर नॉट गोइंग टू राइट सच ब्यूटीफुल ड्राइंग्स ओवर देयर। आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी हो भी नहीं सकती जैसे मेरी है ना, तो फील कंफर्टेबल, आपको समझा रहा हूं, बस आपको पॉइंट्स याद रखने, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, कौन सी ओवरलैपिंग से कितने पाई बॉन्ड, क्या बॉन्ड लेंथ है, क्या बॉन्ड एंगल है, बस ये बात आपको याद रखनी है। यू आर नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस ओवर देयर, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट अ करेक्ट ऑप्शन कीपिंग दीस ऑल थिंग्स इन योर माइंड। थैंक यू, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग अहेड, आइए मजीद बात करते हैं। बेटा क्लियर हुई सारी बातें? आइए एक और मॉलिक्यूल जिसमें हम बात करेंगे, डोंट फॉरगेट इट, इस टॉपिक में आपका चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन चैप्टर 7 इंटर का एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट करा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी तो देखिए फॉर एग्जांपल से अनदर मॉलिक्यूल, मैं थोड़ा केमिस्ट्री को थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, आपको एहसास नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मेरी अपनी केमिस्ट्री है, मेरी मर्जी। ओके, मुझे स्पेस चाहिए। अब आइए प्लीज, दैट्स योर इथीन। आइए इथीन पे बात करते हैं। Ethene C2H4. अब what is it girls? Definitely the structure in your knowledge, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है और हर कार्बन 2 हाइड्रोजन से ज्वाइन होता है like this. Ethene is a different of you. आइए अब डबल बॉन्ड आ गया कार्बन टू कार्बन, तो एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और हम सब जानते हैं जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हर कार्बन के बाद 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और pz इसमें शामिल नहीं होता। ये सारी बातें आपको मैं समझा चुका हूँ। सी आइए तो देखिए लो प्लीज, तो देखो बेटा ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी लाइक दिस, sp2 ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको नाराज ना हो जाए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, sp2, ठीक है बेटा, बिल्कुल इसी तरह कौन हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं है? दिस वाज योर pz unhybridized, जो कि अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा कार्बन का, बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखिए दूसरे इसको कार्बन को देखें, both carbon atoms are in same environment with respect to each other, तो देख जो इसके साथ है वो इसके साथ ही होगा, ये कार्बन बेटा। ठीक है, ये इसका sp2, ये इसका sp2, ये इसका sp2, ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट। और कौन शामिल नहीं होता? दैट्स योर व्हाट, pz। ये pz है जो हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं है। अब देखिए ना, हर कार्बन के पास उसके 4 इलेक्ट्रॉन, जी एक ये रहा, दूसरा ये रहा, थर्ड वन, फोर्थ वन। अब देखो प्लीज, हर कार्बन अकॉर्डिंग टू दिस, हर कार्बन, हाँ जी, हर कार्बन 2 हाइड्रोजन से ज्वाइन है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन और ये देखिए। अब मुझे बताइए, हाइड्रोजन का S
लेकिन कार्बन का sp2 है, ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन, sp2 ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन ये सिग्मा बॉन्ड, सो देयर आर टू सिग्मा बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच कार्बन बाय s sp2 ओवरलैपिंग। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखिए बेटा, ये हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp2, ऐसी तबीयत खराब हो गई, छोटा हो गया बहुत, ये सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरीके से ये हाइड्रोजन ये सिग्मा बॉन्ड, each carbon bond between two hydrogen atoms by s sp2 overlapping. So there are 4 sigma covalent bond in ethene between carbon to hydrogen by s sp2 overlapping. Remaining sp2 of each carbon head on overlap। अब मुझे बताइए जब इनकी head on overlapping होगी तो ये बना सिग्मा बॉन्ड, और याद रखिएगा मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब इसका pz इसका pz, ये दोनों for example ये देखिए my thumb shows sp2 of each carbon, my first finger shows the unhybrid pz of। अब देखो जिस वक्त sp2 और sp2 के दरमियान हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही होगी, जो पैरेलल ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड pz इनकी साइड टू साइड, दिस इज द सिचुएशंस। और p की लोग हाफ अबव द प्लेन हाफ बिलो द प्लेन, इसका ये मतलब नहीं है कि एक पाई बॉन्ड ऊपर बन रहा है एक पाई बॉन्ड नीचे बन रहा है, नहीं, जस्ट रिकॉल माय वर्ड्स, हमने पढ़ा था p ऑर्बिटल्स की दिस वन इज द कॉन्फिगरेशन completely is equal to 1 pi bond, ना, half of the lobe above the plane and half of the lobe below the plane। अब इसी सिचुएशन में आप देखिए जरा प्लीज क्या हुआ, इसका pz इसके pz के साथ साइड टू साइड ओवरलैप करता है, और जब साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड, और मैंने कहा था जब भी डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ये are you getting my point or not? ये the structure of ethene at the front of you, each carbon bonded with 2 hydrogen atoms, or carbon to carbon there is a sigma bond by sp2 overlapping, and one of them is pi bond between pz and hybrid। अब वही बात, if you want to write please the bond length 1.09 angstrom। अब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, देखो जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड था तो बॉन्ड लेंथ क्या थी 1.54, डबल बॉन्ड मींस अट्रैक्शन बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी। The expected bond length between 1.34 angstrom between carbon to carbon, ठीक है। Bond angles between hydrogen carbon to carbon is about 120, और हाइड्रोजन कार्बन टू कोई सा भी एंगल ले लीजिए ना, all angles are of 120 के एंगल होते हैं। If you can give the imaginary lines to connect all possible coordinates, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, ये देखिए, it looks like this, it looks like this, a trigonal structure, just recall my words, मैंने कहा था the sp2 hybridization is also called trigonal hybridization। ethene is at the front of you, total number of sigma bonds are 5, 4 between carbon to hydrogen by s sp2 overlapping, one of them between carbon to carbon by sp2 overlapping, and one pi bond between carbon to carbon pz overlapping। Bond lengths, bond angles, these all things in your mind, यहीं से इन्हीं बातों से आपको अंडरस्टैंड करना है, because you are not going to work on it। Another molecule I want to share with you, please, acetylene, that's your what? Acetylene or ethyl C2H2, स्ट्रक्चर क्या है जी, स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं, सब जानते हैं। Acetylene is a different of you, let me work on it, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, हाँ आइए। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि बेटा सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आइए देखते हैं, हर कार्बन के पास sp दो sp, py pz, recall my words, not involved in hybridization। It was the one of the electron within py, one of the electron in these two, ठीक है, unhybrid py, दूसरा it was your pz
like this. Both carbon atoms are in same environment. आइए दूसरे कार्बन को भी देख लेते हैं. sp it was your unhybrid pz, it was your unhybrid pz, it was unhybrid py. एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा. Clear? The both carbon atoms are in same environment with respect to each other. अब मुझे जल्दी से बताइए, हर कार्बन एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड. ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन. अब sp sp ओवरलैपिंग. ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये रहा बेटा सिंगल बॉन्ड, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. सेम एनवायरनमेंट ओवर देयर. ये लीजिए हाइड्रोजन will be better. ठीक है, ये बना sp सिग्मा. क्लियर? अब देखिए हर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड. डेफिनेटली इसका sp, इसका sp, ये सिग्मा बॉन्ड बना. 2 पाई बॉन्ड्स. अब मुझे बताइए प्लीज, इसका py इसके py के साथ ये बना पाई बॉन्ड. और बिल्कुल इसी तरीके से इसका pz इसके pz के साथ दूसरा पाई बॉन्ड. So in triple covalent bond there are the 2 pi bonds and 1 sigma bond between carbon to carbon. अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे बात करते हैं. तो देखो बेटा, सिंपली बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन टू हाइड्रोजन सेम 1.09 एंगस्ट्रॉम. कार्बन टू कार्बन अब ट्रिपल बॉन्ड लेंथ और शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है. इट्स अबाउट 1.20 angstrom. All angles are of right angle. I mean to say, sorry, 180 angle. So the shape of the molecule is linear or diagonal. So in acetylene or in ethine, each carbon is sp hybridized, having 2 sp hybrid orbital. Py and pz of each carbon remains unhybridized. One of the sp of each carbon overlap with s of hydrogen. There are 2 sigma covalent bond between carbon to hydrogen in acetylene by s-sp overlapping. Remaining sp of each carbon head-on overlap, forming a sigma bond between carbon to carbon in ethyne molecule. Remaining unhybrid of py and pz side-to-side overlap, because the 2 side-to-side expected overlappings are there. That's why there are the 2 pi bonds present between carbon to carbon by py, pz overlapping. The carbon to carbon bond length is 1.20 angstrom and the carbon to hydrogen is 1.09 angstrom. The angle is about 180. The molecule is linear or diagonal. Remember, sp hybridization is also called linear hybridization. Boys and girls, complete picture of these organic molecules regarding hybridization. You are not going to work on it regarding how to write these diagrams or drawing attraction. No, you have already done, I think so. But I tried my best to explain MCQ's point of view. अब मुझे बताइए इसमें से इतने MCQs possible हैं, कितने क्या बॉन्ड होगी, क्या बॉन्ड होंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे. ये तमाम बातें आपने याद रखनी है. MCQs यहाँ से ड्राइव होंगे, आपसे ड्राइंग वहाँ पे नहीं करवाई जाएगी. You are not going to write the beautiful structures of these molecules like me. जो मैंने कहा वो ज़्यादा important, वो याद रखिएगा. Thank you so much. Best of luck. Best wishes. See you next time.